बुला रहे हैं देश की मशहूर साहित्यकार और वर्तमान में आयकर विभाग दिल्ली में महानिदेशक पद को सुशोभित करती डॉक्टर साधना शंकर को, जो अपनी नवप्रकाशित पुस्तक के विभिन्न पहलुओं से हमें अवगत कराएंगे। डॉक्टर साधना शंकर एक कुशल प्रशासक होने के साथ साथ अपने दिल से एक अच्छी साहित्य उपासक भी हैं। अपने चिंतन और विचारों को प्रखर कल्पनाशीलता के जरिए कागज पर उतारने का उनका शौक काफी पुराना है और पिछले कई सालों से टेक्स्ट से टेक्स्ट तक का उनका यह रचनात्मक सफर लगातार जारी है, जिसे आज एक अहम पड़ाव मिलने जा रहा है। देश विदेश की विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपके विशेष लेख तथा कॉलम नियमित तौर पर प्रकाशित होते रहे हैं और आपकी बहुमुखी शख्सियत का एक और सृजनात्मक रूप आज आपकी नई किताब के रूप में अभिव्यक्त होने जा रहा है। आइए हम सब इस विशेष उपलब्धि पर डॉक्टर साधना शंकर का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। मैडम, आप डायस पर आएं और अपनी नई किताब के बारे में हम सबसे गुफ्तगू करें। डॉक्टर साधना शंकर। नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीबडी। आदरणीय महामहिम महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस जी और मंच पर सारे विशिष्ट अतिथिगण, आप सबका स्वागत हो चुका है। मैं थोड़ा सा स्वागत हम इस सभागार में सभी हमारे मित्र और शुभचिंतक बैठे हैं, लेकिन कुछ थोड़े विशिष्ट अतिथि हैं जिनका मैं विशेष रूप से स्वागत करना चाहूँगी। श्री विजय सूर्यवंशी जी जो एक्साइज कमिश्नर हैं, श्री विश्वास नागरिक पाटिल जी जो IPS एडिशनल CP हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, गीता रविचंद्रन जो प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त मुंबई हैं, और प्रवीण कुमार जी जो प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त पुणे हैं, और मेरे बहुत सारे आयकर विभाग के बहुत सारे कलीग्स यहाँ मौजूद हैं। सॉरी अगर मैं सबका नाम नहीं ले पा रही। लता अय्यर MD बार्कलेज बैंक यहाँ है। मैं ज्ञानेश्वर मुले को नहीं भूल सकती जो सदस्य मानव अधिकार आयोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं, और मोहन नदार जी। सबका आप लोग सब यहाँ आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और सबसे पहले आदरणीय गवर्नर साहब, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मेरे इस उपन्यास को इतनी गरिमा दी, और इस कार्यक्रम के चलते मैं सबसे पहली बार आज मुंबई का राजभवन देखा, तो ये मेरे लिए बहुत गरिमा की बात है। मैं थोड़ा सा इस पुस्तक के सफ़र के बारे में बताऊंगी। राज्यपाल जी ने मुझसे मंच पर पूछा कि आप नौकरी करते हुए कैसे लिखती हैं, तो मैंने कहा कि शायद मेरे यहाँ जो कॉलीग्स बैठे हैं कि हर एक को जो सिविल सर्विस में काम करता है, कुछ ना कुछ एक कोई हॉबी या पैशंस लोग रखते हैं, कुछ अपना बैलेंस और कुछ अपनी और दूसरी दुनिया रखते हैं, ताकि दोनों जो असली मेन दुनिया है वो अच्छे ठीक ठाक चलती रहे। और दूसरी बात है कि इस किताब को जैसे मुझे लिखने में 5 साल लगे, सो ऐसा नहीं है कि समय बहुत आसानी से मिल जाता है। और उसके बाद लेट मी से सर, क्योंकि ये साइंस फिक्शन है और मैं एक महिला हूँ जिसने इस किताब को लिखा, तो मुझे 3 साल लगे एक पब्लिशर ढूंढने में, क्योंकि साइंस फिक्शन अब धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो रहा है, लेकिन जब मैंने लिखा था तब उतना पॉपुलर नहीं था। फिर एक महिला ने उसको पेन किया है, तो उसके लिए एक पब्लिशर ढूंढना, इसलिए मैं रूपा की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस पुस्तक को उठाया और निकाला। जब मुझसे कहा गया मैं थोड़ा सा इस किताब के बारे में बोलूँ, तो मैं साइंस फिक्शन लिखने नहीं निकली थी। मैं एक कहानी लिखना चाहती थी जिसमें मैं ये सोचती थी, आई यूज्ड टू थिंक व्हाट वुड हैपन इफ पीपल, if men and women to be more precise stop needing each other for reproduction। अगर हम लोगों को महिला और पुरुष को एक दूसरे की ज़रूरत नहीं हो रिप्रोडक्शन के लिए, और सेंचुरीज के लिए नहीं हो, ये नहीं कि थोड़े समय, सेंचुरीज के लिए नहीं हो, तो जो जेंडर रिलेशनशिप्स हैं, हाउ विल दे रियली बी, व्हाट वुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन मेन एंड वुमेन लाइक। And to write such a story, I had to think of the future, and when you think of the future, you automatically go into the realm of science fiction. So actually I stumbled on science fiction because I wanted to write a story about something which will happen really, which will happen, that I'm very sure of. It's not an if, which will happen, but really thousands of, some many years in the future. So then I decided to set this story on another planet thousands of years in the future.
So in a very minuscule way, this is the story set on another planet in the future where humans migrated from Earth when Earth became unlivable, and men and women live separated by a fence. Because in my imagination, if actually for centuries पुरुष और महिला एक दूसरे से किसी तरह की reproductive link खत्म हो जाएगी, we will become the competing species, and competing actually the only competing species. So मेरी कहानी में the men and women live separated by a fence, and in that time, just like we are seeing now, all of us are living much longer. So life extension has made people nearly immortal. तो ये कहानी उन लोगों के बारे में है जहाँ महिला और पुरुष बिल्कुल अलग रहते हैं, दोनों आपस में भिड़ते हैं, compete करते हैं, एंड सब लोग नियरली हमेशा के लिए जीते हैं. तो ऐसा समाज कैसा होगा? और अगर इसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसमें कौन जीतेगा? Who will be the ascendant? Will it be the men or the women? That is the whole story. That is the main, what should I say, the thread of the story. And this is right now in a book, but I am happy to say that we are working on trying to make this into a TV series. So I hope very soon it will reach out to a lot of other audiences who are not so interested in reading. So, but if the idea kahin aapko interest karta hai, then do pick it up. It is the book is with all of you who are here. And give it a reading. As Ashar said, कि साहित्य जो है या तो चिंतन कराता है, या मंथन कराता है, या प्रेरणा देता है, तो ये आपको तय करना है कि इस किताब से आप किस दिशा में जाते हैं, चिंतन, मंथन या प्रेरणा की दिशा में. और सर, मुझे अगर थोड़ा समय है तो क्या मैं 2 पन्ने पढ़ लूँ या यहीं समाप्त कर लूँ? पढ़ो. ओके, थैंक यू सर. तो मैंने सोचा I'll just read 2 pages from the book, which will give you an idea of what I'm talking about. So the episode I'm going to read here is after this is all on the women's side, where the women have discovered what should I say, a consciousness from Earth on their machines on that planet, and they have learned as to how men and women had lived on Earth. So they've just heard that story, that what was the original relationship between men and women. So these 2 pages are their reaction to it. So the names are also of science fiction, so characters के नाम बिल्कुल फर्क है, but I think it will give you a flavor of what I have written. So the story of Earth has just got finished, so that's where this begins. Ivy stood up with a start. What she had just processed was beyond something she could even imagine, think, or dream in her world. It was startling, disturbing, and at some level, disgusting. Could there ever have been such an interaction with those creatures on the other side of the fence? It was probably a bizarre rumor that the men were trying to spread. Ivy was shaking her head as she stood in the darkness. She felt strange and disoriented. Maya's story seemed like a fantasy that had no basis. I don't want to know anymore, Maya, said Ivy. The creatures you described may look somewhat like those on the other side of the fence, but they were obviously a different species that died on Earth. She stood near the dark window and tried to feel the familiarity of the night as it enveloped the city around her. A man had found Elon? Why had she never been told that by anyone? And if that was the case, why did the men bring them to Elon too? The whole story smacked of a plot. Theoni sat there transfixed. Men and women had shared such a dramatic, physically intense activity, it was unimaginable. What was it that had compelled them to do something like that? The physical form seemed to provide some sort of strange joy to both of them as they indulged in that activity. It seemed alien, new, and incomprehensible. Theoni continued to sit near the screen. The story did not throw any light on how creation had happened on Earth. Even if it was a fantasy, Theoni thought Maya's story was fascinating. Maya, how did creations happen then? Who is this dad that Ria keeps referring to? Where is she now, your creation?
Well, creations happened when a man and a woman made love at a time when the woman's body was fertile. Physical intimacy led to procreation. Sometimes fertilizations also occurred outside, but women always carried the baby for 9 months and gave birth through a painful, laborious process. Dad was one of the terms kids used to refer to the man who was their father. Men and women needed each other to create Tuni. We were dependent on each other for procreation since the dawn of time. Somewhere along the way it changed. So now Tara is created from a cell provided only by you and is nurtured in an incubator. She is handed over to you when she is fully formed. On the other side, men can do the same. You do not need each other for reproduction anymore. The basis for civilization has changed. This love between those men and women, what did it even mean? I checked the lexicon. It defines love as a deep feeling for someone or something. What was it, Maya? Maya's tinkling laughter dissipated the stress that had accumulated in the room. Outside, the night was disappearing and a faint light was embracing the city. It is ironic, girls, millions of light years away in a world that does not even use the word anymore. The meaning of love still puzzles humanity. Love is whatever it is to the person who feels it. It can be exhilarating and uplifting. It can also hurt and cause pain. But for me, it is energy, positive energy. Maya, Aryan was wrong. Even though we all use the name he gave this planet alone, no one knows who discovered it. Ivy pointed out. Yes, Ivy, he was wrong about some things, and I was wrong about some others, sighed Maya. Her voice was fading into the distance. She seemed to be retreating into the dark caverns of the system again. What were you wrong about, Maya? Ivy tried to stop her from leaving. When men and women stopped needing each other for procreation, the conflict did not stop. It sprouted wings and escalated beyond our wildest imagination. It took a form that none of us could foresee. Look at where things are in this day and age. That's all. Thank you so much.